So, everyone, and welcome to Career Launcher. So, I hope you all are aware that every Tuesday and Wednesday at 7 p.m. I meet you on this YouTube channel. So, Tuesday 7 p.m. we discuss static GK, and on Wednesday we discuss current affairs. So, today is Tuesday 7 p.m. Let us begin with the static GK. We'll discuss previous year questions mostly, and on Wednesday because PYQs are getting repeated and many of the themes are also getting repeated. So that's why we are discussing it here. Let us begin. So I think I'm audible, visible, everything is fine. So those who have not, this is the 20th part. And if you want to watch the previous parts, you can watch it. Just first of all, please subscribe to our channel. Go to the playlist. Here is the playlist. ये वाला है. इसमें view full playlist पे click करो and you will get all the previous parts. If you watch all those previous parts, it will be very helpful for you in the upcoming exams preparation because of course a lot of things, previous year questions directly or indirectly gets repeated. Okay, so please watch these classes. That would be very beneficial. Okay, so let us begin. So in last class we had done till here. तो हम लोगों ने पिछले क्लास में यहाँ तक किया था El Nino we were discussing. ठीक है. So if you watch the 19th part, we were talking about El Nino and La Nina. Okay. Now let's talk about this one. The next question says the ancient archaeological site Doyong Dhansari Valley is located in which state of India? Meghalaya, Assam, Arunachal Pradesh, Mizoram. What is the right answer to this question? And if you know the answer, please answer me in the comments. I'll be very happy to know that you know these PYQs. अगर आपको आता है तो आप जरूर आंसर कीजिए. Subansari, Dhansari, these all are tributaries of Brahmaputra river. है ना, ब्रह्मपुत्र, ये सब नाम से ही आप पहचान लोगे. सुबानसरी एक्सेट्रा ना. तो असम में होगा. सो बी इज द राइट आंसर, है ना. से दिस नॉट क्या, तो यहां से इट गोस असम. ओके, इज इट क्लियर? तो यहां से इट गोस असम. ओके, इज इट क्लियर? आई थिंक द क्लास इज स्टकिंग. ठीक है. सो ये ब्रह्मपुत्र रिवर है ना. दिस इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया. सुबानसरी, ये सब उसी रीजन में नाम रखे जाते हैं. सो ऑफ कोर्स यू कैन रिमेंबर इट लाइक दिस आल्सो. द नेक्स्ट इज व्हेन डिड वी celebrate first National Space Day with the theme touching lives while touching the moon, India's space saga? So what was that special event that led to National Space Day being celebrated? So basically 23rd August 2023, Chandrayaan 3 landed successfully. So the Vikram lander, I'm sure you must have heard about this. Vikram landed successfully and the Pragyan rover moved. So then 23rd August 2023, and that's why from next year onwards, people started celebrating this as National Space Day, or the government started celebrating. Okay. So this is what you should be knowing. So 23rd August is National Space Day. So please याद रखिएगा, है ना. बहुत फेमस हुआ था. विक्रम लैंडर एंड प्रज्ञान रोवर गॉट सक्सेसफुल, है ना. सो इट गॉट लैंडेड ऑन मून्स साउथ पोल. So that is what you should be knowing. The next one is the directive principle of state policy. Part 4 of the Indian Constitution have been adapted. Like कहां से लिया गया? So I am sure आपको इतना तो पता होगा कि Indian Constitution we have borrowed a lot of things from different places, different constitution, हाँ. So कुछ US Constitution से लिया, कुछ UK से, कुछ Ireland से, कुछ France से, है ना, कुछ Germany से, like this. So Indian Constitution we have made and we have a lot of borrowed features. So the question that is being asked is directive principle of state policy, which is actually mentioned in part 4 from the class is getting hanged, right? Actually mentioned in part 4 from the class is getting hanged, right?
So directive principle of state policy, Article 36 to 51. So it has been adapted from which of the following constitution? कहाँ से लिया गया है? If you know me, please tell me. I'll be very happy to know. The right answer is option C, Irish Constitution or Constitution of Ireland is the right answer to this question. ठीक है, ठीक है, that is what you should know. Article 36 to 51, Part 4 of the Indian Constitution. Okay, please remember it. If someone is asking fundamental rights we have taken from where, then what should be the answer? Part 3 we have taken from where? What should be the answer? Article 12 to 35. We have taken it from where? Can anyone tell me? I'm waiting for the response. फंडामेंटल राइट्स तो पार्ट 3 में मेंशन है, आर्टिकल 12 से 35 में कौन से, कहां से हम लोगों ने लिया है? We have taken from which constitution, or the ideas we have borrowed from which constitution? The idea of fundamental right, which is mentioned in Indian Constitution, Part 3, we have taken it from US Constitution. Okay, that is what you should know. The next one, which among the following central public sector enterprises are not Maharatnas? So I'm sure you must be aware the public sector units or public sector enterprise are categorized as Maharatan and Navratan and Mini Ratnas, right? Like this, है ना? Mini Ratna category 1, category 2, but this is like this, है ना? So इसमें से कौन सा public sector enterprise Maharatna नहीं है? That is what you have to answer. Not they are asking. So it means one of them would be, यही मतलब हुआ ना, चार में से कोई एक महारत्ना है. One of them is a Maharatna, the others 3 are not. If you know the answer, please tell me. The right answer is ये वाला. This is actually a Maharatna. Okay. So A, B, and C. जहां जहां मिला है A, B, and C. So option 1 is the right answer to this question. Okay, BSNL is neither a Maharatna nor a Navratna, है ना? ये बताओ चाहिए. Airport Authority of India is also not a Maharatna. HAL जो Maharatna declare किया गया था ना October 2024 में. So this was actually part of current affairs also, and that's why it was asked in 2025. So it was a part of current affairs, and you could have just eliminated this option, and you would have reached to the answer. ठीक है. कुछ बोलेंगे सर Indian Oil Corporation with us. Yes, IOCL was also given. Yes, Indian Oil Corporation was also given Maharatna status, but since they do not have requisite number of non-official directors, they are not enjoying the power of Maharatna. ठीक है. So power पूरी तरह utilize सिर्फ NTPC कर पा रहे है ना. So technically you can say you can eliminate this. You can consider this also option C not to be part of Maharatna because they are not enjoying the powers. So option A would be the right answer to this question because of this news. इस news से आप answer कर सकते थे question, and it was a part of current affairs. So ideally when you are preparing for CUT, you have to read at least last 11-12 months of current affairs. ये आपको पता होना चाहिए. Last 11-12 महीने का current affairs आपको पढ़ के जाना है. No, some people will be asking, sir, what is Maharatna? Mini Ratna, Navratna, how I'll be able to understand. So यहाँ पे लिखा है start from here. Mini Ratna category 2 profit last 3 years को होना चाहिए. फिर Mini Ratna category 1 पे जाएंगे. ये सब इसका ये है टोटल इतना इन्वेस्टमेंट है ना. इसका एग्जांपल्स है. देखो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज मेरी रत्ना. और कौन कौन ऑप्शन में था? एयरपोर्ट अथॉरिटी, बीएसएनएल और आईओसीएल है ना. बीएसएनएल कहां पे? इधर ही कहीं पे होगा ना. आईओसीएल हालांकि भारत ना है, बट स्टिल अगेन दे आर नॉट एंजॉयिंग द पावर्स है ना. वी हैव डिस्कस ऑलरेडी. तो आप देख सकते हो. The next one is, this is the next question. Sorry, I'm very sorry. This is the next question.
name of the reverse and the reverse system. You have to match it. You have to choose the correct statement. So it means these are the reverse, and these are the prominent main reverse of that main reverse of that system. Or like the these are more broader definition, broader view. In the left one reverse. तो आप वैसे आंसर कीजिए. And I think you should be answering it. I mean, it's not very difficult if you are aware of basic geography. एकदम बेसिक 9-10 का भी में आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आप आंसर कर लोगे. It is not that difficult. I hope so. Like आपने इंडस वैली सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम पढ़ा होगा कि सतलज इज अ पार्ट ऑफ दैट. दिस इज वेरी इजी, है ना. Indus water dispute was also in the news, or Indus water treaty was also very much in the news. Indus, Jhelum, Chenab, Ravi, Bias, Satluj, है ना. नर्मदा रिवर कहां पर आएगा? देखो, यमुना गैंजेस रिवर सिस्टम का पार्ट है ना. यमुना इज एक्चुअली ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा. हो गया, ये तो पता होगा, है ना. अब देखो, फ्लोइंग ईस्टवर्ड नर्मदा जो है फ्लोइंग ईस्टवर्ड इनटू बे ऑफ बंगाल. तो नर्मदा ईस्टवर्ड तो नहीं जाती, वेस्टवर्ड जाती. सो ऑफ कोर्स बी का 3 होना चाहिए, बिकॉज ऑफ कोर्स दिस इज एक्चुअली नर्मदा क्रिएट्स द डिस्टिंक्शन बिटवीन, लाइक फ्रॉम नर्मदा यू कैन से पेनिनसुलर इंडिया हैज स्टार्टेड. गोदावरी फ्लोज इन द ईस्टर्न डायरेक्शन इन बे ऑफ बंगाल, राइट. सो द आंसर इज 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1 राइट लास्ट, है ना. 2, 3, 4, 1 इज द राइट आंसर. लेट्स टॉक समथिंग अबाउट दैट, है ना. तो मैप देख लेते हैं. सो दिस इज इंडस रिवर. ओके, इसके नीचे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, हेर, सतलज. सतलज स्टार्ट्स फ्रॉम तिब्बत, कम्स हियर लाइक दिस, है ना. ये सब आके मिलती है, फिर इंडस में जाके मिलती है. सो दिस इज सतलज. सो कैन से दिस इज अ पार्ट ऑफ इंडस रिवर सिस्टम. ओके, नेक्स्ट है नर्मदा. तो नर्मदा वुड बी हियर समवेयर फ्रॉम बॉर्डर ऑफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, अमरकंटक प्लान. एक सेकंड, जस्ट होल्ड ऑन. ऐसे जाती है ना. सो दिस इज नर्मदा रिवर. सो ऑफ कोर्स वो पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट ही हो गया. नेक्स्ट वो लिख रहे हैं गोदावरी फ्लोइंग ईस्टवर्ड इनटू बे ऑफ बंगाल, है ना. तो गोदावरी स्टार्ट समवेयर हियर, है ना, नासिक के आसपास से शुरू होती है और ऐसे समथिंग रफली ऐसे करके जाती है. ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे, आई थिंक इट इज गोदावरी. सो इट फ्लोज इनटू वेस्ट बे ऑफ बंगाल, दैट इज ट्रू. फिर यमुना पार्ट ऑफ जैसे सिस्टम, दिस आल्सो वी हैव टू अंडरस्टैंड. गंगा ऐसे स्टार्ट होती है, दिस इज गंगा. और दिस इज फ्रॉम बिहार. This red one is Yamuna actually. This is the place where it meets is called as Agra. Okay, this has to be very crystal clear. Is it clear? This is the place where it meets is called as Agra. Okay, this has to be very crystal clear. Is it clear? पता नहीं बीच में ग्लिच हो जा रहा है क्या? Okay, let's move on. ठीक है, तो यही बात क्लियर. I think we are done with this answer. Let's move on to the next one. Which of the following subjects are included in the concurrent list? So मैंने आपको बताया schedule of the Indian Constitution, list, union list, state list. ठीक है. Okay. So union list, parliament has power, or the center has power to make laws. State list, state legislature has power to make laws. Concurrent list, both union and state has power to make laws, right? So this we have, and I'll show you these types of questions are PYQ repeated multiple times. These types of questions are getting repeated. That's why we are discussing it. Which among the following subjects are included in the concurrent list? What is the right answer? So let's see. So union list, banking is actually in union list.
So this is actually in union list. Next is education. So education, I'm sure you must be aware, it was brought in the concurrent list by 42nd Amendment, 1976. Concurrent list. And trade union are also concurrent list. Okay, so B, C, and D is the right answer. ठीक है, so कहाँ पे B, C, and D? So D is the right, है ना? Option 4. है ना? So that is what you should be knowing. So education, forest, and trade unions, these are on concurrent list. Education is very famous. For the Second Amendment, it became very famous. It was moved from state list to education list to concurrent list. D is the right answer. ठीक है? ये ध्यान रखिएगा because these types of questions gets repeated. Trust me. ठीक है? बार-बार repeat होते हैं. That's why we are discussing it. The next is the method of protecting steel and iron from rusting by coating them with a thin layer of zinc is called. ये तो class 9-10 में पढ़ाया जाता है स्कूल में NCERTs में. It's very easy. Zinc की coating किया जाता है उसको. It's very easy, and I'm waiting for anyone's response. If anyone can give the response. Anyone? The right answer is galvanization. देखो alloy तो होता है ना जो मिक्सर बनाता है ना मल्टीपल मेटल्स का ना. So greasing में तो grease लगाते हो तो lubricant की तरह काम किया था ना. So galvanization is very famous process of applying a protective zinc coating to iron or steel to prevent corrosion or rusting. ठीक है. So B is the right answer to this question. ये पता होना चाहिए. The next one is which among the following is India's first indigenously designed and built aircraft carrier warship? This is very, very important. It was very much in the news. Even this year also, next year, 2026 also it can be asked. Because Modi ji visited this ship on this year Diwali, that is 2025 Diwali mein he was there. देखो पहले क्वेश्चन पहचाना. इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली मतलब होता है मेड इन इंडिया, नॉट इंपोर्टेड. बाहर से नहीं खरीदा है, इंडिया में बनाया गया. ठीक है. बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर वॉरशिप ऐसे लिखते हैं. इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर, आईएसी लिख रहे हैं ना. एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब होता है अ शिप विच कैन कैरी एन एयरक्राफ्ट. शिप बनाई जाती है ऐसे होता है, उसका शेप ऐसा कुछ होता है ताकि एयरक्राफ्ट कैन टेक ऑफ, है ना. मतलब उसकी जो सरफेस बनाया जाता है वो ऐसा बनाया जाता है कि मतलब एरोप्लेन जो शॉर्ट मतलब जेट्स होती है, मिलिट्री जेट्स, वो लैंड कर सके. ठीक है. सो मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर, व्हाट इज इट्स नेम? INS विक्रांत. सो डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. आपको ये बताना है, यू हैव टू टेल मी दैट INS विक्रांत is manufactured or has been manufactured by which company? 2022 सितंबर में इनॉग्रेट हुआ था. कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड. Okay, D is the right answer. Cochin Shipyard Limited. INS Vikrant is an aircraft carrier service, है ना. So Cochin Shipyard Limited. Vikrant means courageous. ये तो आपको देख रहे हो शेप से लग रहा है यहाँ से प्लेन टेक ऑफ करने में या फाइटर जेट टेक ऑफ करने में आसानी होगी. So उसका शेप ऐसा बनाया जाता है. ठीक है. Okay, so we have 2 aircraft carrier. Another one is INS Vikramaditya, but this is not indigenous. This we have bought from Russia. तो ये देसी मतलब मेड इन इंडिया नहीं है INS Vikramaditya, but INS Vikrant जो है मेड इन इंडिया. The next is who among the following women activists convinced Mahatma Gandhi not to restrict salt satyagraha or Dandi march to men alone? आपने सुना होगा डांडी मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम ऑफ गांधी जी, साबरमती आश्रम गुजरात, है ना, टू डांडी. वो लोग वॉक किए थे. आई थिंक 240 माइल्स डिस्टेंस था ना. दे वॉक्ड. वी आर टॉकिंग अबाउट मार्च अप्रैल 1930, है ना. मार्च कर रहा है नहीं. ठीक है. This led to the beginning of civil disobedience movement, CDM. So that Dandi March.
तो कौन सी लेडी थी जिन्होंने कहा था, ये वुमेन एक्टिविस्ट, उन्होंने कहा था कि सिर्फ मेल को नहीं फीमेल भी अलाउ कीजिए डांडी मार्च में? Who said this? If you know the answer, please tell me. I'll be very happy to know. The right answer is Kamala Devi Chattopadhyay. A is the right answer to this question, है ना? Not to restrict Dandi March and wider also Temgura. The next is, who among the following countries became the newest member to join NATO in March 2024? ये current affairs का part था, काफी ज्यादा न्यूज में था ये. And please tell me, where is the headquarter of NATO? Also, North Atlantic Treaty Organization. And what is NATO? कोई बता सकता है NATO का कॉन्सेप्ट क्या है? The right answer is स्वीडन, है ना? स्वीडन बना था, उससे पहले फिनलैंड ही बना था अप्रैल 2023 में, ठीक है, और मार्च में बना था स्वीडन. So the latest one to join is Sweden. For the right answer to this one. Where Brussels is the headquarters? Okay, that is what you should know. North Atlantic Treaty Organization. Belgium, Brussels, 32 countries. Secretary General is Mark Rutte. Okay, so it's actually, I mean, it was made in April 1949. At that time, there was the US ने अपना एक मतलब US and European countries made their own military alliance. To counter it, the Soviet Union made Warsaw Pact in 1955, which got dissolved in 1991. Okay, that is what you should be knowing. This is the right answer. Let's move on to the next one. Now you have to match it, and books and authors are very much asked. जो recent years में देखा. खैर, अगर आप match करा सकते हो, it's very good. Is there anyone in the class? If you know it, please answer me. I'll be very happy to know. आप बताओ. Is there anyone? So no one is responding. So let me answer. ठीक है. चलो चलते हैं, आंसर ही देख लेते हैं. Golden Road: How Ancient India Transformed the World by William Dalrymple. बहुत famous है ना? William Dalrymple has written many books on Indian history. ठीक है. Next है Man Eaters of Kumaon. Kumaon is actually a region in Uttarakhand, है ना? East Uttarakhand, जहाँ पे you will find Nainital, है ना? Jim Corbett National Park. Those regions are called as Kumaon. ठीक है. Man Eaters of Kumaon, written by Jim Corbett. Okay. So here is Jim Corbett, the national park named after him, है ना? So Jim Corbett is a person, and Jim Corbett के नाम पर Jim Corbett National Park is there. It is considered as the first national park in India. So Jim Corbett was the person, and his name you'll find this. And man eaters, I think they are referring to tiger. देखो फोटो में लगा हुआ है tiger. Man eaters of Kumaon. So Kumaon is actually near like the same like Nainital region and like Jim Corbett region. ठीक है. Eastern Uttarakhand, मान लो ये उत्तराखंड ऐसा स्क्वायर दिखता है. So this region is Kumaon. And the west region is called as Garhwal. ठीक है. मदर और एक और है मदर बाई मैक्सिम गोर्की. The Mother by Maxim Gorky, C का 3. And The Vegetarian by Hang Kang. So now why this is important, I'll tell you. देखो, Hang Kang won Nobel Prize in Literature in 2024. Okay. And she was very much in the news for her book, this book. It was actually in the news. So it was a part of current affairs in October 2024. It was in the news, and that is why next year in 2025 they asked this question. So at least you should have answered the last one, D ka 1. And D ka 1 is this place, this place, this place. So you should have eliminated option 2. इतना तो आप कर सकते थे. खैर. So answer is 2, है ना, 4,
2431 2431 कहाँ है? 2431 इज हियर, है ना, राइट? 2431, ठीक है, यस इज द राइट आंसर. ओके, let's move on to the next one. The dough used for making bread is fermented using baker's yeast, which consists of which of the following microbes? dough समझते हो, जो हम लोग हिंदी में कहते हैं रोटी बनाने से पहले we make what we call it as, हिंदी में कहते हैं ना आटा गूंदना, like that's called as dough in English, ठीक है. So it is used for making bread is fermented using baker's yeast. इसमें एकदम सिंपल है, yeast पूछा जा रहा है, yeast किससे बिलोंग करता है? फंगस से, हो गया, that's it, बस यही क्वेश्चन था. is the right answer. यूकैरियोटिक सिंगल सेल फंगस फ्रॉम फंगी. सो ये इतना घुमा फिरा क्वेश्चन पूछे थे, है ना. सो दैट वाज द क्वेश्चन, is the right answer. Which of the following is not a non-metallic mineral resource found in India? Please read it carefully. So this is a chemistry question, or whatever you can say, geography question. But I think it's more a chemistry question, less a geography question. Because resource found in India ज़्यादा ये है question, non-metallic mineral. And I'm sure you must be aware manganese. इतना तो पढ़े होगे school days में. I'm sure you must be aware that manganese is a metal. है ना, ग्रेफाइट, एलोट्रोपिक कार्बन का, लाइमस्टोन, कैल्शियम ऑक्साइड, इस तरह होता है ना, माइका, ये सब नॉन मेटल होता है. बट ये तो पक्का पक्की है ना मेटल होता है. दिस यू आर श्योर, आई एम श्योर, है ना. इट इज अ केमिकल, है ना, हार्ड ब्रिटल सिल्वर मेटल ऑफन फाउंड इन मिनरल्स कम्युनेटिव विद आयरन. B is the right answer to this question. The next is arrange the following major advances in Indian epigraphy in chronological order beginning from the earliest to the most recent. Chronological order मतलब होता है date wise set करना है. Which event came first, then after that which event, then which event, like this, है ना. पहले कौन सा है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा है, like this को कहते हैं chronology में set करना. epigraphy मतलब ये सब event को आपको set करना है. डेसिफर का मतलब डिकोड करना होता है ना, स्क्रिप्ट को डिकोड करना. ये तो आई थिंक एनसीईआरटी बुक में भी है. ईयर्स याद रखना इज स्लाइटली डिफिकल्ट बिकॉज क्रोनोलॉजी मतलब आपको यू हैव टू रिमेंबर द डेट्स, एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स स्लाइटली डिफिकल्ट बिकॉज यू हैव टू रिमेंबर एटलीस्ट रफ आइडिया होना चाहिए कि कौन सा इवेंट कब हुआ. सो फर्स्ट इशू ऑफ एपिग्राफिया इंडिका was the first official publication of Archaeological Survey of India from 1882 to 1977, है ना. 1882 हो गया, हाँ, फर्स्ट वॉल्यूम, तो यहां पे लिखा गया 1882. चलो नेक्स्ट है जेम्स प्रिंसेप डेसिफर्ड अशोकास ब्राह्मी स्क्रिप्ट. कब हुआ था? 1837 के आसपास, तो यहां लिख देते 1837. नेक्स्ट फर्स्ट इशू ऑफ एपिग्राफिया कर्नाटिका, है ना, ओल्ड मैसूर रीजन से रिलेटेड था. डायरेक्टर ऑफ मैसूर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कंपाइल करवाया था. पीरियड ऑफ 10 years 1894 से 1905, ठीक है. तो अब इसको हम लिखते हैं 1894 से 1905 के आसपास कहीं पे हुआ था. फाउंडेशन ऑफ एशियाटिक सोसाइटी बंगाल, बहुत फेमस, 1784 एज फार एज आई रिमेंबर. लेट मी चेक. यस आई एम राइट, बाय विलियम जोन्स. ये बहुत फेमस है, ये पूछते हैं कई बार एग्जाम्स में, ठीक है. एशियाटिक सोसाइटी बंगाल या रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, है ना. अब इसको आपको सेट करना है अर्लीस्ट टू मोस्ट रिसेंट. सबसे अर्ली कौन सा होगा? सो फोर्थ वाला डी वाला सबसे आगे हो गया. उसके बाद कौन सा होगा? देखो 1784 के बाद दिस वन बी होगा. उसके बाद कौन सा होगा? ए होगा. देन उसके बाद सी होगा, है ना. सो डी बी ए सी, वेयर इट इज. अरे इट्स नोवेयर द आंसर. आई थिंक आई एम करेक्ट. डी बी ए सी, डी बी सी ए is right. 1894 से 1905. अच्छा, आई थिंक दिस विल बी DBCA. आई विल टेल यू व्हाई. ये डी हो गया, ये बी हो गया. इसमें कंफ्यूजन है कि ये पहले हुआ कि ये पहले हुआ. सो DBAC इज नॉट देयर बट दिस आंसर इज देयर. इट मींस दे आर कंसीडरिंग दिस टू हैपन बिफोर. इसको पहले मान लिया इससे. दैट इज व्हाट आई गेस, बिकॉज एपिग्राफी कर्नाटका इज नॉट श्योर कि एग्जैक्ट ईयर कब था. सो आई गेस दैट इज द रीजन. ऑल द बहुत डिफिकल्ट है इस तरह क्वेश्चन पूछना. यहाँ पे 1882 लिखा है, लेकिन यहाँ पे लिखा है 1892 से 1920 में पब्लिश हुआ.
तो पब्लिश हुआ 1892 में से लेके 1920 के बीच है ना. So perhaps that's why they are writing it 1892, और इस हिसाब से perhaps they are considering. And still there's a confusion between A and C because according to Wikipedia this is the case. ठीक है. और एपिग्राफी कैंडी का 1894 से 1905 दिखा रहे. So I guess इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछना भी नहीं चाहिए, but I think then they are considering C. I mean epigraphica Karnataka to happen before this. So from this logic the answer should be DPCA because we don't have any other option. D तो फर्स्ट होगा ना, E तो 1780s में ही, तो 2 और 3 में से कोई एक आंसर होगा. तो D A के बाद A तो होगा नहीं, है ना, बिकॉज ये तो 1837 में हुआ. So the answer would be second, option second. That is what I can understand. है ना. The next is India is not a member of which of the following regional intergovernmental organization. So regional means it is not in the entire India, entire world. It is limited to a particular region of the country, of the world. Intergovernmental means multiple governments are participating as members. तो इसमें से कौन सा से इंडिया मेंबर नहीं है आपको बताना है. And I think it's easy if you read it like newspapers and news articles, you can answer it. So the right answer is ASEAN, Association for Southeast Asian Nation का इंडिया मेंबर नहीं है. It is not a member of this because it is in Southeast Asia, ये वाला रीजन में ना. This is called as Southeast Asia, and they have formed a grouping called as इसको short में कैसे SEA लिखेंगे, and they have formed a grouping called as ASEAN, Association for Southeast Asian Nation. Okay, and it is headquartered in somewhere here, actually Jakarta in Indonesia. ठीक है. That is what you should be knowing. So B is the right answer. अच्छा, next class we will start from here only. Next Tuesday 7 p.m. पे, because we will discuss BIMSTEC, SCO, SARC also. Okay. So please read about the other 3 options. We'll be discussing in detail from here. So this is all about today's class. Now I'll be meeting you tomorrow at 7 p.m. with weekly current affairs. So thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.